నిజ చరిత్రను గర్వించండి, గుర్తించండి, ఓటు వేయండి, వేయించండి అని నేను మిమ్మల్ని ప్రార్థిస్తున్నాను. What I said today in the Perambur workshop, you compare with the DA committee report. Mr. Surya Prakash and Surya Prakash and Parthiban, other leaders will give you copy of report of DA. Why I am saying a union, an organization claims to be for the cause of workers has been betraying and doing all wrongs. What all these sins they are doing, you know, I need not tell. Their characteristics are known to you. Second important point I want to mention today. The NPS आने से पहला 1957 में NFIR लड़के रेलवेज में लिबरलाइज्ड पेंशन स्कीम लाई. हम बोलते हैं पुराना पेंशन स्कीम OPS. OPS कब आई? 1957 में. 1957 से पहला पेंशन नहीं थी रेलवेज में. वो 1957 से 22 तारीख दिसंबर 2003 तक पुराना पेंशन स्कीम, फैमिली पेंशन, डाइवर्टेड डॉटर पेंशन, अनमैरिड डॉटर पेंशन, कम्यूटेशन इत्यादि बेनिफिट्स हम लाए. 22nd December 2003 is the black day for railway employees and government employees. That day, the NDA government led by respected A.B. Vajpayee ji issued ordinance for introduction of NPS from 1/1/2004. From 1/1/2004, contributory pension scheme NPS came into force. NPS में क्या है? It is a no guarantee scheme. पेंशन का गारंटी नहीं है. जो तनख्वाह से डिडक्शन करता पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते, रिटायरमेंट पे कितना पेंशन कॉर्पोरेशन से कितना मिलेगी पता नहीं है. आज वो कर्मचारी 2004 जनवरी से नौकरी में आए, वो लोग का लाइफ बर्बाद हो गई. NFIR is fighting from that day. One step NPS का संरक्षण के लिए हम ग्रेच्युटी जीते, ग्रेच्युटी मिल गई. लेकिन NPS रद्द नहीं हुआ. जब मल्लिकार्जुन खड़गे की रेल मंत्री थे 2014 में, NFIR विस्तार रूप में एक्सप्लेन की. रेल कर्मचारी का वर्किंग कंडीशन, फील्ड में काम करने वाले 80% से ज्यादा है. On average, 2 employees are getting killed every day on Indian Railways. ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ఇది నా స్టేట్మెంట్ కాదు. अनिल काकोडकर जी, पूर्व अध्यक्ष एटॉमिक एनर्जी कमीशन, हाई लेवल सेफ्टी रिव्यू कमिटी चेयरमैन, in his report he has given, after conducting survey for 2.5 year period, it is noticed